So great evening, all my dear friends. So let's start our question and session. So there is one question: how to get clarity about things you want to do. Lot of confusion how to fix this. See how to get clarity about things you want to do. So first of all, you need to understand what kind of gifts you have got, what kind of patterns you have got, and as per that you need to plan your life. देखिए, आप सिर्फ गोल के पीछे भागते रहेंगे just because you need to have a goal, you need to be in a growth area, it's not going to help you. ऐसे हो सकता है कि एक गोल आप अचीव कर लेंगे और आपको बाद में लगेगा कि मैंने गोल अचीव क्यों किया. So why I went for this goal? Because you will not achieve that happiness. और हैप्पीनेस को आप तभी एक्सपीरियंस कर पाओगे जब आपके रियल एरिया में आप गोल रखेंगे, आपके एरिया ऑफ पर्पस में गोल रखेंगे. सो वी गोइंग टू वर्क इट आउट. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यू कैन शेयर मी योर डेटा, देन वी कैन डिस्कस ऑन दिस पार्ट. तो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और उससे फिर आसान हो जाएगा हमें वो कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए. आई होप यू गॉट द आंसर. Go ahead, let me know if you have any other question. Great. So it's quite actually, I guess my timing is wrong today because today is a Makar Sankranti and usually minimum 10 to 15 people join for the question answer session. But today it's like only 2 people. Still, I'm taking it quite positively. It's like one-to-one session. It is like almost the one-to-one session. So let's do it. So if you have any other question, just share it or just raise your hand. I'll unmute you and you can ask whatever you want. Something is better than nothing. And you today, you both of you join just like an angels. I really appreciate that. You know what? Today magic happened. आज सुबह भी मेरा 10 से 5 का एक ट्रेनिंग था. Actually, it was one day workshop kind of a thing. All the participants were the ladies. All the participants. At the last, hardly half an hour, some 1 or 2 male joined. So today there is some magical happening with my life. All ladies are getting into the session and blessing me in countless ways. Amazing. It's a fantastic day. Go ahead. Let me know. Yep. Let me know if you have any other question. Feel free. See, you can ask me absolutely whatever you want. So there is one more lady. Now, this is absolutely magical. This is absolutely unbelievable. Jagruti ma'am had joined. मैंने बोला ना कुछ तो आज हो रहा है, क्या हो रहा है? I really don't know what is happening. All the angels, goddesses are coming to bless me. This is what I feel. So welcome, Jagruti ma'am. Let me know if you have any question. Whatever question you have. There is some challenge in the video part. Hence, I'm not turning on my video. But you can ask me whatever question you have. You can put it in the chat box or raise your hand. You can put whichever question you have in the chat box or just raise your hand. Great. Which all social media platform to use initially when you start up to have maximum reach? See, I will tell you now. This is very easy. This is very easy. You need to understand where is your target audience. Where is your target audience? And we need to go as per that. So if someone is telling you, you know what, LinkedIn is amazing, you get amazing reach and all. If someone is telling you that LinkedIn is amazing, but if your target audience is youngster, then LinkedIn is not a right platform. Then you'll have to go to Instagram. Then you'll have to go to Instagram. So it depends. आपका टारगेट ऑडियंस कहां पे है, इसके ऊपर ये गेम डिपेंड करता है. कभी कभी तो आपका बिजनेस सेटअप ऐसे भी हो सकता है कि यू नीड नॉट नीड सोशल मीडिया. आपका टारगेट ऑडियंस आपको कोई और जगह पे मिल सकता है. इट ऑल्सो कैन हैपन. एग्जाम्पल समझो, एक आपका टारगेट ऑडियंस इंजीनियर्स है. ओके, आपका टारगेट ऑडियंस इंजीनियर्स है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जो इंजीनियरिंग की फर्म है. See, there are so many engineering federations, right? So you can directly establish rapport with them so that you will get all the cream crowd. You can get in touch with them. You can talk to them personally instead of social media. Social media में एक पंगा है, मैं आपको बताता हूँ. There is one challenge in social media. I'll tell you what is that challenge. Social media में जब आप किसी को रीच करते हैं, स्पेशली थ्रू पेड एड्स, सो जब पेड एड के थ्रू आप वो इंसान तक पहुंचते, आपके टारगेट ऑडियंस तक, तो फेसबुक को पता चल जाता है
कि ये जो टारगेट ऑडियंस है आपका, उसको आपका प्रोडक्ट जरूरी है, तो फिर फेसबुक क्या करता है, जितने भी बाकी के कॉम्पिटिटर्स है आपके, वो सबके प्रोफाइल आपके क्लाइंट को दिखाना शुरू करता है ऑटोमेटिकली। इट इज अल्गोरिदम, इट इज अल्गोरिदम। तो फिर क्या होता है कि आपका कंपैरिजन हर एक टॉम डिक एंड हैरी के साथ होता है, सबका। तो फिर वो कंपैरिजन में आपका ब्रांडिंग कितना है नॉन, उसके ऊपर फिर पूरा गेम डिपेंडेंट रहता है। बट इन नटशेल आई टेल यू, इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ ऑन सोशल मीडिया, then in the terms of videos, in the terms of videos, YouTube is a fantastic platform, because when you upload videos on YouTube, they remain on YouTube, they remain on YouTube for the lifetime. देखिए बाकी के जगह पे भी रहते हैं, लेकिन बाकी के जगह जगह पे कैसे है, व्हेन यू कम टू इंस्टाग्राम और मे बी फेसबुक, वहां पे बाकी के भी कंटेंट आप अपलोड कर सकते हैं, जैसे ब्लॉग्स अपलोड कर सकते हैं, फोटोज अपलोड कर सकते हैं। उसके वजह से when it comes to the Instagram and the Facebook, you do not get that reach. But if you want amazing reach in the terms of videos, then YouTube is a phenomenal platform, and it is by this technique or strategy I'm sharing you with one of my mentor. His name is Russell Brunson. So if you want to go in the depth of marketing, Russell Brunson is a great marketing guy. I hope you got the answer. So Subodh ji, welcome. Go ahead, ask your question. Go ahead, ask your question. Whatever question you have, you can ask. There is one technical challenge in the video. When I'm turning on my video, actually, it is going in hang mode. I don't know why, but it is going in hang mode continuously, and hence I'm keeping it off. See, when I'm turning on the video, it is going in hang mode. I don't know what is the challenge. Doesn't matter. I'm there with you in the terms of audio. So you can ask me whatever question you have. Go ahead. Krishna ma'am, welcome. अगर आपको कोई सवाल है, you can you can raise your hand, you can raise your hand, or maybe you can put your question in the chat box. You can put your question in the chat box. So same scenario, just like morning session जैसे मैंने आपको बताया. So 1 2 3 4, 4 ladies and 1 male. Now a lot of ladies are coming into the session, especially today. Go ahead, my dear friends. Let me know whatever question you have. जो भी आपका सवाल है, please put it in the chat box or just raise your hand and get the clarification. Go ahead, my dear friends. How to get leads to reach out when you are a beginner. Okay. ये एकदम मस्त आपने सवाल पूछा है. I really appreciate that. Thank you so much. देखिए, आपको क्या करना है when you begin the journey. When you begin the journey, ideally, I would say, do not look at the monetary terms. Always focus upon adding value. I'll give you an amazing example. So you simply go to schools, colleges, and tuition classes. If the students are your audience, and try to deliver a lot of sessions to them. In case if you have some other people, then you can do one-to-one coaching via Zoom and do it for free. I will tell you, do it for free for first 10 success stories. I'm not saying first 10 people. I am saying 10 success stories, 10 genuine, powerful success stories. When you generate 10 powerful, amazing success stories, and when you upload those videos, then you can create abundance of leads. You will get reference after reference, reference after reference. See, almost 70 to 80% clients usually I get through reference. Because whenever there is a reference, you have great amount of credibility. So in order to have the great credibility, you can create success stories at the start. This is what I can say. This is the best way to get the leads. So there is one question. Several people are asking you to join the class like Ajay. What is it? I really don't know. I don't know which class you are referring to. Kindly forgive me. I really don't know this person also actually. Which class it is about actually? I really don't know. See, there are so many classes and so many things are there. Nowadays when you go on Facebook or Instagram, you get millions of ads of different classes and all those things.
Welcome, Vishranti. Welcome. So one more female energy in the room. Welcome, Vishranti. Let me know if you have any question. There is some challenge in the video. I'm just reminding you in case you are getting confused कि यार video क्यों नहीं दिख रहा है मुझे. So there is no challenge at your end, challenge at my end. There is some challenge, technical challenge, hence I'm keeping it off. Okay. I really don't know. Actually, see, when people say generating leads is very easy, I would say. It is very easy. You know, there is something called as lead magnet. सुना है कभी lead magnet? Have you ever heard about lead magnet? अगर आप एक लीड मैग्नेट क्रिएट करते हो, you can get great amount of leads. Now, what are the lead magnets? Having a free session, a free webinar, it's a lead magnet. Maybe writing an ebook is a lead magnet. Then maybe offering one short course, very short course of 5 to 6 videos, maybe of 10 to minutes. Again, this can be the lead magnet. So lead magnet, देखिए आपको लीड जनरेट करने के लिए वैल्यू एडिशन करना है. आप कोई भी मार्केटिंग एक्सपर्ट के पास जाइए, दे आर गोइंग टू टेल यू ऑल द सेम थिंग्स because I have invested huge amount of money in order to do the marketing and all those things. I had a number of courses, and I'm telling you, until and unless you add value, no one is going to come to you. आपको सोशल मीडिया के ऊपर जाना है, वैल्यू एडिशन करना है, create lot of videos, create lot of content. Now what I am doing, my dear friend, what am I doing right now? अभी मैं आपके जिंदगी में वैल्यू एडिशन करके एक तरह से लीड जनरेशन ही कर रहा हूं. मैं यहाँ पे आपसे 1 रुपया नहीं ले रहा हूं क्वेश्चन आंसर के लिए, बट आई एम एडिंग वैल्यू इन योर लाइफ. और मैं वैल्यू हर महीने 2 2 3 3 क्वेश्चन आंसर सेशन लूंगा, अलग अलग वीडियोस आपको भेजूंगा, बहुत वैल्यू ऐड करूंगा, इतना वैल्यू ऐड करूंगा, इतना वैल्यू ऐड करूंगा कि आप मेरे फैन बन जाओ, आप मुझसे बहुत प्यार करना शुरू करो. When you do that, automatically you will give me the leads. You will always remember me whenever there is a requirement of training or something, and you will give me lot of leads. How is the formula, my dear friends? How is this formula? एमी मैम वेलकम. मैंने बोला कि नहीं, मैंने शुरुआत में बोला था कि आज, और बाय द वे एक मेल जो ज्वाइन हुआ था, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, ही लेफ्ट द ट्रेनिंग. So all the ladies are there in the room right now. और सुबह का जो सेशन था 10 से 5, उसमें भी सभी लेडीज ही थी. Today something magical is happening, and thank you so much for being here, and you are acting like angels for me. Go ahead, ask your question. By the way, ये टेक्निक आपको कैसे लगी? वैल्यू एडिशन. सी इट्स वेरी सिंपल. जितना वैल्यू आप ऐड करेंगे उतने ही लीड्स आपको मिलेंगे. और मेरे दोस्त, लीड अगर आप फेसबुक मार्केटिंग या फिर इंस्टाग्राम मार्केटिंग से जनरेट करोगे, वो आपको हर बार शक की नजर से देखेंगे. वो आपको हर बार शक की नजर से देखेंगे, बिकॉज वो आपको बहुत लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हैं. लेकिन आपको ऐसा ही लगता, जब आपको रेफरेंस के थ्रू कोई लीड जनरेट होता है तो वो आपको शक के नजर से कभी देखता नहीं है. बिकॉज रेफरेंस जो होता है, जो मिडल मैन जिसके वजह से वो लीड आई है, वो लीड बहुत ऑथेंटिक लीड होती है और वो बहुत जल्दी कन्वर्ट भी होती है. डू एग्री? डू एग्री एवरीवन? Whenever there is a lead through a reference, then it is going to be really strong lead. वो कन्वर्ट होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट मोर देन 90% होती है. हेंस जो आपके ये आपको मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, प्लीज राइट डाउन वन नेम ऑफ वन बुक. यू विल लव दिस बुक, यू विल एंजॉय दिस बुक. The greatest salesman. No, it is not greatest salesman. Kindly forgive me. The name of the book is How to Sell Anything to Anyone. How to Sell Anything to Anyone. The name of the book is How to Sell Anything to Anyone. And the author is Joe Girard. I'll put the name in a chat box. I'll put the name in a chat box. How to Sell Anything to Anyone. How to sell anything to anyone. And the name of the author is Joe Girard. Joe Girard.
माय डियर फ्रेंड, ये जो किताब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये कोई टॉम डिक एंड हैरी ने लिखी हुई किताब नहीं है। ये बंदा बहुत जबरदस्त बंदा है। इसने 1970s 80s में बहुत जबरदस्त मतलब परफॉर्म किया था। वो कार सेलर था। और ये किताब मुझे 3 मेंटोर से रेफरेंस में मिली है, मतलब लोगों ने रेफर किया। एक बार सोनू शर्मा, ये बहुत जबरदस्त स्पीकर है, उसने भी रेफर किया था, मतलब यूट्यूब के वीडियो में सबसे बेस्ट किताब करके रेफर किया। संतोष नायर करके एक बंदा है मुंबई में, वो भी एकदम जबरदस्त है, सेल्स में बाप इंसान है, तो उसने भी रेफर किया था। और मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड की थी मुंबई में, वो भी एक ब्रांड बिल्डिंग की ट्रेनिंग थी, वहां पे ये किताब को बताया था। तो ये बंदा ये कहता है, आपका मतलब इसके जिंदगी में उसने जो भी कमाया बहुत बड़े लेवल पे गया। बाय द वे, इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। ये कोई टॉम डिक एंड हैरी नहीं है, इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, ज्यादा से ज्यादा कार सेलिंग करने के लिए। तो कार सेल करना आपको समझ में आ सकता है यार, बहुत बड़ी डील है, बिकॉज इट्स अ कॉस्टली अफेयर टू सेल कार टू समवन। तो उसने सबसे ज्यादा कार सबसे कम समय में बेचे थे, और इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये कहता है इसकी किताब में कि मेरा जो बिजनेस है वो 80%, 70 to 80% ये रेफरेंस से आया। रेफरेंस से क्यों आया? बिकॉज उसने कहा मैंने उनके साथ वैसे रिलेशन मेंटेन किया, जो जो भी मुझसे कोई प्रोडक्ट खरीदता था, मतलब कार परचेज करता था, उसके साथ में अनबिलीवेबल रैपो बिल्डिंग करता था। फिर वही लोग मुझे बार 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 रेफर करते रहते थे। हाउ इज दिस टेक्निक? Isn't it really cool? Isn't it really amazing? You need to add unbelievable value. मतलब आपका क्लाइंट कस्टमर कभी सपने में भी नहीं सोच सकता ये लेवल की वैल्यू एडिशन आपको उनकी जिंदगी में करनी है। कैन यू डू दैट? कैन यू डू दैट? If you can do it, then only you can sustain in any kind of business. Otherwise, not. Otherwise, not possible. So, Nilay ji, welcome. By the way, Nilay ji had joined way all the way from Qatar. Go ahead, Neeraj. Let me know whichever question you have. There is a technical challenge in the video. I'm just letting you know in case you're getting confused. ये मुझे वीडियो क्यों नहीं दिख रहा है? I'm telling it again and again because people are quite habitual to see my videos, but now they cannot see it. Doesn't matter. Everything has a reason. Go ahead, my dear friends. Go ahead. Let me know if you have any question. By the way, are you getting the value right now? Are you getting the value right now? Go ahead, my dear friends. Let me know if you have any question. Just raise your hand or put your question in the chat box. Raise your hand or put your question in the chat box. जब तक आपके सवाल चलते रहेंगे तब तक ये सेशन चलते रहेगा। आपने सवाल पूछना बंद कर दिया तो ये सेशन बंद हो जाएगा। Great. So, Hansa ma'am, you have created history by asking 3 questions consecutively. Great. Congratulations for that. Awesome. Thank you so much for asking question. What are the tools you use to automate and ensure time is used for different purposes? Great. See, for automation, there are so many tools actually. I'm not too much into it. Let me be very blunt with you. I'm not too much into it. Actually, I really need to automate. I really need to automate lot many things. Yeah, see, there are small things I'm doing for automation. Recently I purchased one software, CRM software for that, लेकिन अभी तक उसको मैंने explore नहीं किया है. And recently I bought one email marketing tool also, email marketing. So I have thousands of email actually of different people. So I'm planning to do the mass mailing to them because this is a great tool of a marketing, is a great automation tool, because in email automation tool you literally send thousands of mail at a click, and also you get to know the open rate, मतलब कितने लोगों ने वो मेल ओपन किया है, you get to know that. This is the beauty of the email software. So slowly and steadily I am going into the automation mode, but as of now I am trying to do everything on my own. Yeah, there is one team for creating some posters and all, but they work on the basis of projects. Go ahead, my dear friends. Let me know if you have any question.
How did it help you by keeping on investing? Wow. Wow. This is the top of the world question. This is a question of the day. This question must get some kind of prize. How did it help you by keeping on investing on yourself? This is, I'm telling you, if you don't invest on yourself, you will never ever grow in life. If you don't invest on yourself, you never ever grow in life. Because यार देखो, I'll give you a very simple analogy. अगर कोई ट्रेनर के पास जाता हूं मैं और उसका एक प्रोग्राम अटेंड करता हूं, you know what I'm doing? I'm literally buying his experience. I'm literally buying his experience. So I keep on investing on myself. See, अभी प्रोग्राम आने वाला है by राहुल भटनागर. By राहुल भटनागर, there is an amazing program. I strongly recommend. बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है. But this program is going to be in Delhi. This program is going to be in Delhi for 3 days. तो अभी 3 दिन के लिए दिल्ली में जाना रहना वगैरह मुझे भी फिजिबल नहीं है because I have other commitments. You know what I am going to do? I am going to pay the full amount and I am going to take recording of that for 3 weeks. अगर उसका मैं सिल्वर लेवल का पैकेज लेता हूं विच इज अराउंड 6,000 रुपीज, इफ आई पे देम 6,000 रुपीज, देन आई गेट दैट कोर्स फॉर दैट रिकॉर्डिंग फॉर 3 weeks. सो 3 हफ्तों में मुझे फिर रिकॉर्डिंग को फिनिश करना होगा. एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गो ओवर देयर इन दिल्ली, बट आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन माई सेल्फ. Oh, so there are so many questions. Let me go for that. Kindly forgive me. Yeah, there is one more question. How important is it to have different mentors for different things? How do we know that whether we need to have more mentors or not? Yeah, exactly. See, we need to have different mentors for different things because हर एक का speciality अलग है यार. Everyone is specialized in certain things. Not one mentor can fulfill all your desires. I'm telling you, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनके अलग अलग mentors होते हैं अलग अलग एरिया के लिए. So we need to do the same because we need to have that expert advice. Simple example लेता मेरे दोस्त, जनरल प्रैक्टिसिंग डॉक्टर के पास जाओगे, जनरल फिजिशियन वगैरह होता है ना, तो वो आपको सभी बताएगा, मतलब आंख के लिए बताएगा, कान के लिए बताएगा, नाक के लिए बताएगा, लेकिन उसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं रहेगी. डू यू एग्री? ही मे नॉट बी एक्यूरेट पर्सन. But if you go to specialist like eye specialist, ENT specialist, then you get bang on target answers. And hence, it is really important to have different mentors. For marketing, see, for marketing, I take help of Russell Brunson. For mindset, I take help of Tony Robbins. For health, for spiritual stuff, I take help of BK Shivani. Even I am a guru also, whom I follow. For yoga and meditation, I have different mentors. I follow Brahma Vidya technique and all. So for everything, I have different mentors. And I'm planning to have mentor for my health also. I'm waiting for one of my friend to launch his course. वो बहुत जबरदस्त कोर्स है उसका, एंटी एजिंग का कोर्स है. मतलब उसका एज है 50. हिज नेम इज वरुण मेहता. कभी गूगल पे जाके चेक करना, सॉरी गूगल नहीं, इंस्टा पे जाके वरुण मेहता. हिज एज इज अराउंड 50, लेकिन वो दिखता 35 का है. And he is going to launch one anti-aging kind of a course. He is in a collaboration with Success Gyan. It's a very big marketing company, a training organizing company. Kindly forgive me. So उसके साथ उसका जब कोर्स लॉन्च होगा, बिकॉज अभी उसका कोर्स लैक्स में है. If I go to him for any kind of support, he will charge lakhs of rupees from me. So I'm waiting for him to join the Success Gyan because he was the super speaker, expert speaker competition में वो first आया था. So Success Gyan soon going to promote him. और Success Gyan के प्रोग्राम usually 10,000 के रेंज में होते हैं. Then I'm going to join him as a mentor, as a mentee actually, as a student. How do we know that whether we need to have more mentors or not? See, if you are not growing in your life, as you should ideally grow, then you need more mentors. You need support, help from someone else. And hence you need to keep on investing on yourself. आपको बार बार अलग अलग लोगों के साथ इन्वेस्ट करना होगा. बिकॉज यार देखो, अगर आप बिजनेस में हो या फिर लाइफ में भी यार, एक ही मेंटोर से आपको सब चीजें नहीं मिल सकती. इट्स नॉट पॉसिबल. इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. सो यू नीड टू हैव डिफरेंट मेंटोर्स. और लोग आई रियली
मुझे सरप्राइज लगता है, लोग एक कोर्स कर लेते हैं, कोई भी एक कोर्स, मतलब 5,000 10,000, और बोलते हो गया मेरा, सब समझ में आ गया, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। दे आर डूइंग अ ब्लंडर। देयर आर सो मेनी ट्रेनर्स, दे डू ओनली वन कोर्स, मे बी दे इन्वेस्ट 50,000 1 लाख, और उसके बाद कभी जिंदगी में किसका मुंह ही नहीं देखते, और वो कभी ग्रो नहीं करते। एंड टेलिंग यू, इन लॉकडाउन आई इन्वेस्टेड 10 lakhs, आई इन्वेस्टेड 10 lakhs, मैं जितना भी कमा रहा था पूरा मैं इन्वेस्ट कर रहा था। यू नो, अभी आपको झूठ लगेगा ये, 2020 का जो लॉकडाउन था, आई डिडंट बाय क्लोथ्स इन दिवाली। दिवाली में मैंने नए कपड़े नहीं परचेज किए, एक भी रुपए का नया कुछ परचेज नहीं किया। वॉट एवर मनी आई हैड, आई बॉट कोर्सेस। माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छा कोट है, लिख के ले लो, बहुत काम आएगा आपके। बी वाइल वाइल डूइंग एक्सपेंसेस, बी लाइक अ बेगर। जब एक्सपेंस करना हो तो भिखारी की तरह एक्सप्लेन करो, भिखारी की तरह। और जब इन्वेस्ट करना हो ना, राजा की तरह इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट लाइक अ किंग एंड स्पेंड लाइक अ बेगर। दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम वन ऑफ माय मेंटर, राहुल भटनागर। और लोग एग्जैक्टली उल्टा करते हैं, while purchasing and all, spending, they spend like a king, और इन्वेस्ट करते समय नहीं 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 नहीं, बस बस बस, हो गया हो गया हो गया, वो बेसिक कोर्स हो गया, हो गया, समझ में आ गया। ऐसे मत कीजिए। You need to invest on yourself. See, I'm going to invest a huge amount. Actually, there are some amazing courses, certifications. I'm planning to do even certification from Tony Robbins. Tony Robbins जो training देता है, उसका भी एक certification है, उसकी एक academy है. So that it is a quite costly affair. It is more than, I guess, maybe 5 to 10 lakhs, something like that. So I'm going to do that. I'm going to do that because जितना खुद के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे उतना आप ग्रो करेंगे। और पूजा पुनीत करके एक लेडी है, देखो मैं नाम फट 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 बोल रहा हूं, आप ये लिख के ले लो, सच में बोल रहा हूं, मरते दम तक ये समीर नारुत को आप दुआ देंगे। दिस इज माई कमिटमेंट। पूजा पुनीत करके एक लेडी है, शी इज वुमन एम्पावरमेंट कोच, सिर्फ लड़कियों को, लेडीज को वो ट्रेनिंग देती है। और उसने एक बहुत जबरदस्त फंडा बताया था। वो बताती है, जितना आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करता है ना, उतनी आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब एज अ कोच ट्रेनर, जितना आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे उतना आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। सी आई गिव माय एग्जांपल। इन लॉकडाउन, लॉकडाउन भी नहीं, यस यस 2021, इन द 2021 मार्च आई यूज्ड टू चार्ज ओनली 10,000 रुपीज, ओनली 10,000 रुपीज फॉर वन टू वन कोचिंग, वो भी डर डर के मांगता था। उसके बाद मैंने एक ब्लेयर सिंगर का एक एडवांस लेवल का कोर्स किया। I paid 2 lakhs for that. I paid 2 lakhs for that. Then I realized यार मेरी औकात यार इतनी भी 10,000 रुपए वाली नहीं है यार, मुझे ज्यादा मांगना चाहिए। Then I asked 20,000 rupees. I got around 20 clients in a lockdown, I am saying. I got around 20 clients who were paying me 20,000 rupees. Then I realized मेरी औकात 20,000 नहीं है, I need to charge 30,000 rupees. Then I started asking for 30,000 and people agreed for that. Then I realized मेरी औकात वो नहीं है. See, in that meantime, I was investing like crazy. I was investing like crazy on myself. I realized I need to raise my bar. I started asking for 50,000 rupees, and I have around 10 clients right now who are paying me 50,000 rupees for one-to-one coaching. And my next target is 1 lakh rupees. And people are going to give me that. I know. I'm adding that unbelievable value in their life. And I know I'm going to get that. It is a matter of investing on yourself. Great. Go ahead, my dear friends. Let me know if you have any question. देखो मैं मेरे एग्जांपल इसीलिए देता हूं, नॉट जस्ट टू बोस्ट अबाउट माई सेल्फ। आई एम वेरी ग्राउंडेड पर्सन एंड आई नो what exactly I am and what the role of a God is. मेरे एग्जांपल मैं आपको इसीलिए देता हूं, जस्ट टू गिव यू द हिंट, आई एम फॉलोइंग द सिस्टम। जो सिस्टम मैं आपको बोल रहा हूं, मैं फॉलो कर रहा हूं। इट इज नॉट अ बोल बच्चन, आई एम नॉट अ बोल बच्चन। जो मैं सिस्टम फॉलो करता हूं वही आपके साथ शेयर करता हूं। See, I have a plan to even join the training of Tony Robbins also. Tony Robbins के एडवांस लेवल के वर्कशॉप है, बिजनेस मास्टरी उसका वर्कशॉप है। कल ही उसका मैंने एडवर्टीजमेंट देखा। इट इज $10,000, not 10,000, actually it is $11,000. It is around 9 lakh rupees for 3 to 4 days or 5 days, something like that. And I really want to do that course. I'm going to do that. I'm going to do that. अगर अभी मेरे मतलब कुछ मेरे प्लानिंग शुरू है,
कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे शुरू है विद गॉड्स ग्रेस एंड योर ब्लेसिंग्स, अगर वो क्लिक हो जाते हैं इमीडिएटली आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट ओवर देयर। जितना आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करोगे उतना आप ग्रो करोगे। आई टोल्ड यू, स्पेंड लाइक अ बेगर एंड इन्वेस्ट लाइक अ किंग। अगर सच में ग्रो करना है तो आपको पता है दुनिया में मोर देन 90% पीपल इन्वेस्ट अ लॉट बिलो देयर हेड। उनके दिमाग के नीचे जो भी है ना, मतलब कपड़े, मोबाइल, ये वो, उसके ऊपर बहुत जम के खर्चा करेंगे, लेकिन कुछ सीखने की बारी आई तो बैकफुट पे जाते हैं। 90% पीपल, मोर देन 90% पीपल, डोंट बी इन दैट कैटेगरी। चलो मैं आपको यहाँ पे एक एक कंसेप्ट बताता हूँ, ये कंसेप्ट आपको जिंदगी भर याद रहेगा। लर्न का लर्न का स्पेलिंग आपको पता है ना? आई होप यू नो द स्पेलिंग ऑफ लर्न। आई होप यू नो स्पेलिंग ऑफ लर्न। लर्न लर्न मतलब सीखना। लर्न में लर्न में अगर आप देखोगे तो अन छुपा हुआ है। लर्न में मेरे दोस्त अन छुपा हुआ है। तो जितना सीखोगे, जितना खुद के ऊपर इन्वेस्ट करोगे, उतनी आपकी लेवल बढ़ने वाली है। और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं पता है? एक बार एक कोर्स कर दिया, सर्टिफिकेशन आ गया, तो उसके बाद वो किताबों को बोलते हैं नमस्ते किताब, जिंदगी में फिर कभी नहीं मिलना, तो तेरे जगह पे रहे, मैं मेरी जगह पे रहूंगा, मेरे को जॉब भी मिल गया है, मैंने का इतना पगार भी चालू है, अभी सीखने की कोई जरूरत नहीं है। और वो इंसान ऑर्डिनरी इंसान रहता है और ऑर्डिनरी जिंदगी जीता है और कभी निकल जाता है, कभी किसी को पता भी नहीं चलता। आम आदमी, मैंगो पीपल। लेकिन जो इंसान पागल होता है वो खुद के ऊपर पागलों की तरह इन्वेस्ट करता है। And this is what I learned from my different mentors, and I honestly follow that system. I hope you will remember this concept always. Learn में ही earn छुपा हुआ है। तो अगर आपको जबरदस्त अर्निंग करनी है तो जबरदस्त लर्निंग शुरू करो, खत्म। So simple. Go ahead, my dear friends. Let me know if you have any question. Let me know if you have any question. Whatever question you have. See, if you are not comfortable in understanding the Hindi, then you can ask me your question in English. I mean to say, you unmute yourself, raise your hand, I'll unmute you. You ask whatever question you have, and I will answer in English in case you have challenge in Hindi. Great, 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 my dear friends. Let me know if you have any question. And some of the questions were really awesome. I'm really grateful to you for that. And if I just want to tell you, my dear friend, if you are into any form of business, or in case you want to, boost your success in the terms of business, my dear friend, marketing is the soul of that. Marketing is the soul of the business. I'm telling you, please be the expert in marketing. Pooja Puneet, I heard one time, Pooja Puneet said, you need to do PhD in marketing. You must do PhD in marketing if you want to grow your business. Now, how I know about Pooja Puneet? Because my wife purchased her course, and whenever she used to listen, those question answer session or training, I also used to attend them because she's quite great. She's quite phenomenal. By the way, Pooja Puneet she's number 7, and I know what number 7 is all about. Number 7 is a pure giver. Number 7 is a amazing, amazing person. They are born to help the humanity, nothing else. And hence, I love whatever she says. Go ahead, my dear friends. Let me know if you have a question. Still, we have around 5 to 10 minutes. Yeah, I'll extend session by 10:15, 10:30 also if you keep on asking question. अगर आप सवाल पूछोगे तो ये क्वेश्चन आंसर सेशन आगे बढ़ेगा. The first time in my life I am doing question answer session without my video. There is some challenge. See, whenever I'm trying to turn on the video, it is getting in hang mode. It is going in the hang mode. Yeah, it is going in a beautiful hang mode. I really appreciate the hang mode for that. Go ahead, my dear friends. Let me know if you have any question. कुछ भी पूछो यार. This question answer session belong to you. ये आपका प्लेटफॉर्म है. आप जितने सवाल पूछेंगे तब तक ये सेशन जारी रहेगा.
Go ahead, my dear friends. Let me know if you have any question. Otherwise, we will have to wind up today's question answer session. Jagruti ma'am, you haven't asked any question. Go ahead, ask your question. Vishranti. Oh, wow. So there is one person. Go ahead, boss. Go ahead. Unmute yourself. Yeah, good evening, Samir ji. No, good Uh, evening. Great evening. Great evening, great evening. Yeah. This is the one I want to ask. Like, I have attended your subconscious training in Yeah, ITI. right, Yeah. right. So actually, what is happening? Like, I recall like what the seminar happened that we need to talk positive things Yeah, and yeah. But in practice, I don't know. Like somewhere that is not coming into this thing because I believe that is very great. Like great evening, great morning. But yeah. still, we were used to the old practices. Like Yes, yes, yes. how. So just like some tips, like how to consistently we can maintain that. Yeah, I yeah. want to. Yeah, great. So this is an amazing question. I really appreciate that. Thank you so much. You know what you can do? You can form certain rituals. Okay. Please understand, we are made up of the habits. Right. We Right. are servants of our habits. Now, what you need to do, you need to make a list of all the learning you got and what kind of things you need to implement in your day-to-day life. Right. Right. And you need to make a checklist of that. You need to make a checklist of that. And every single day, when you end your day, just have a glance at a checklist and ask yourself, did you follow that? Okay. Every single day. And when every single day, when you'll take the review, see, it may happen like, 15 days, 20 days, you will realize you are not following it at all. But every Hmm. single day, there will be a trigger to your brain that you need to follow, you need to follow, you need to follow. And over the period of time, you will establish the habit. Okay. You will establish the habit. And in order to form the habit, maybe you can have the accountability partner also. You can have accountability partner also. I mean to say, whichever habit you want to inculcate in yourself, develop in yourself, you just have a mastermind alliance or accountability partner. So what that accountability partner will do? That partner will keep on asking you questions. Maybe, twice a week or thrice a week or maybe every day, that have you followed any system today? Whatever you learn, have you followed? Then you will have to answer him whether you followed, not followed, and in case you can show him the proof or show her the proofs, and you can do the same with that person. So when you are accountable, then automatically the probability of success increases. Understood. Yep. There are so many ways. There is an amazing book I'm reading right now. You also read this book. You will love me for this book. You will love that Okay. author also. Atomic Habit. Atomic habit. Yeah. Yeah. Atomic Mhm. Habits. Phenomenal, phenomenal, phenomenal book. How to form habits. What is the Okay. role of a habit? How you form the habits. Okay. Okay. Fine. And one more thing, in order to form habit, which we followed actually, which we followed in our training, you need to shift your identity. The moment you shift your identity, then automatically your behavior changes. And identity is nothing but the belief you have about yourself, the self image you have about yourself. Do you remember we did one exercise? I am a great public speaker. I am a great public speaker. Yeah. Yeah. Right. Right. So why Yes. we did that? We did that just to form one amazing self image, to have the great identity. My dear Right. friend, once you have identity that I am a great public speaker, then automatically it is reflected in your behavior. Mm-hmm. In your behavior, I'll give my example. See, I was aware of one breathing exercise technique which was known as Brahma Vidya. I learned it Mm-hmm. in 2013, but I never followed it. I learned it and I followed for over 2 months and then I left. Okay. Then for almost, 14, 15, 16, 18, 19, 20. So almost 6 to 7 years, I didn't do anything with that technique. But in 2020 lockdown, I realized so many trainers are coming up. So many trainers and competition is rising like anything. And apart from that, I realized that if I want to earn the money in this lockdown and post lockdown, I really need to raise my standard. I really need to be, world class speaker. How Mm. am I going to be a world class speaker? If I call myself a world class speaker, then how world class speaker is going to behave? Then Right. I got the answer. The world class speaker will always follow some amazing yoga meditation techniques on consistent basis.
so that he can go at a world class level. And I started following Brahma Vidya breathing exercises tool, which requires around 1 hour every day. Every day, I need to invest proper 1 hour, 60 minutes to do that. It is quite boring. It's boring like hell, but I'll have to follow it if I want to go at the world class. Very simple. Hmm. But it happened only because I changed my identity. I was asking myself how the world class speaker will behave. Ask yourself this question: how the world class speaker or outstanding or extraordinary person will behave in his life. Is extraordinary person going to say good morning? Never. Extraordinary Yeah. person always going to say great morning. Right. Right. So this question you keep on asking about yourself, and this is a concept which I learned from Atomic Habits. You purchase that book, read that book, you will love it. Okay. Sure. Great. Thank you so much for asking this question. I really appreciate Thank. that. Thank you. Thank you. There's one more question. Can you tell how to break a habit that is not serving you? Wow. See, the moment you shift your identity, automatically your habit is going to change. So there was an amazing example in that book, Atomic Habits. There was one lady, she wanted to reduce her weight. And in order to reduce her weight, you know what she used to do? She used to ask herself. Earlier she used to be on a junk and all. बहुत ज्यादा जंक फूड एंड खाती थी. उसका वेट बहुत बढ़ चुका था. तो जब भी वो जंक फूड उसके सामने आता था, वो खुद को सवाल पूछती थी, क्या हेल्दी पर्सन ऐसे खाता है? कभी स्लिम एंड ट्रिम पर्सन ऐसे खाता है? तो आंसर आता था अंदर से नहीं, तो वो नहीं खाती थी. जब उसको स्टेयर केस दिखते थे, स्टेयर केस, तो खुद को पूछती थी. और बाजू में लिफ्ट भी है, the elevator also is there, and staircase are also there. Then she used to ask herself how the healthy person will behave. Healthy person will go for the staircase. फिर वो चलने लगती थी. Right? Are you getting my point? This is how you can change your bad habits. Ask yourself the question. Whenever you're doing that thing, ask yourself, are you really that person? Are you really becoming that person? The answer will be no, obviously. And this is how you can break the habit. See, I'll confess something. I'll confess something right now. See, I'm very blunt when I want to share something. I don't hide anything. I never get up. I used to. From today onwards, actually, today I woke up at 6 a.m. And every single day I'm going to wake up by 6 a.m. But earlier, prior to that, earlier, for last 5 to 6 years, my getting up time is shaky. Sometimes 6, sometimes 7, sometimes 8, 9, 10, 10:30. My God, it has been varying like anything. Why? Because whenever I get some subject at night, like any book or any video or any kind of course, I go crazy and I keep watching it, and I just forget about the time and everything. I keep watching till 3, 4, which was really wrong. And because of which I was getting up late. Then I realized that if I want to become really healthy and world class, I really need to be fixed on my timings. Then I announced, you know what I did? The one more thing you can do when you want to establish one habit, if you want to break some habit, you need to announce on social media that this is what you're going to do. जब आप सोशल मीडिया के ऊपर अनाउंस करते हो ना, आपकी इज्जत दाव पे होती है. जब इज्जत दाव पे होती है ना, तो इंसान बहुत ईमानदारी में मेहनत करना शुरू करता है. तो दिस इज व्हाट आई डिड. आई अनाउंस यस्टरडे. अगर आप फेसबुक पे जाके देखेंगे, आई अनाउंस यस्टरडे. मैंने कन्फ्यूज भी किया कि मैं कभी जल्दी नहीं उठता हूं, जैसे अभी मैं कन्फ्यूज कर रहा था. और मैं अभी रेगुलरली ये जल्दी उठना शुरू करूंगा. और इसके लिए मैंने क्या किया है, सिर्फ बोला नहीं है. व्हाट आई डिड, आई फॉर्म्ड वन मास्टरमाइंड अलायंस. समीर नारद ये ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हैं. इट इज फ्री फॉर डाउनलोड. यू कैन डाउनलोड दैट ऐप. और ऐप में मैंने एक ग्रुप बनाया है. एक ग्रुप बनाया है, उसका नाम है 6 AM क्लब. तो उसका रूल क्या है, रोज सुबह, अगर आपको भी सुबह उठने का चैलेंज है, तो आप क्या करेंगे, वो सभी नारद ऐप डाउनलोड करेंगे और मुझे ऐप में आप मैसेज भेजेंगे मुझे कि प्लीज ऐड मी इन 6 AM क्लब. तो मैं आपको ऐड करूंगा. और ऐड होने के बाद सुबह 6 बजे उठने के बाद from 6 to 6:15, 15 मिनट का बफर मैंने दिया है in case you know want to go to washroom or you want to just to do some meditation or something like that. So 6 to 6:15 is the timing जिसमें आपको वो ऐप के ऊपर आना है. You need to turn on the app, go in that group 6 AM club.
और वो ग्रुप में जाके आपको ऑडियो मैसेज भेजना है। यस, एवरी डे आई गेट अप बाय 6 am, एवरी डे आई गेट अप बाय 6 am, एवरी डे आई गेट अप बाय 6 am, ऐसे 10 बार जोर से बोलना है और वो ऑडियो मैसेज आपको ग्रुप में छोड़ना है। दिस इज वॉट यू नीड टू डू एवरी सिंगल डे। सो टुडे आई डिड इट, I'm going to do it tomorrow, day after tomorrow, because now there is a huge pressure on me. My you know my status is on the stake right now. मेरी इज्जत दाव पे लगी हुई है. And you know what? There is one program going on by Tony Robbins, which is going to happen. वो ग्रुप में जाके भी मैंने ऐलान कर दिया कि I am going to get up every day by 6 am. तो अभी तो पूरे जान पे आया है यार. अभी तो करना ही करना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है. I hope you got the technique. If you want to break any habit, just announce it on social media. मैं आपको विवेक बिंद्रा का एग्जांपल दूंगा, एकदम ताजा ताजा एग्जांपल है. विवेक बिंद्रा बहुत बल्की था, मोटा था, लेकिन तो भी बहुत बड़ा ब्रांड था. लेकिन उसको भी पता था यार, इतना बल्की रहूंगा तो आगे चल के मेरी विकेट गिरेगी, आगे चल के हेल्थ में मुझे ही चैलेंजेस हो गए और लोग भी ताने मार रहे. तो उसने क्या किया पता है? उसने 100 डे चैलेंज अनाउंस किया. 100 डे चैलेंज. और 100 डे चैलेंज में वो हर दिन एक्सरसाइज के फोटोज अपलोड करता था, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ वहां पे. तो अभी हर दिन, अभी 100 डे चैलेंज बोल दिया है तो हर दिन फोटोज अपलोड करने ही करने. अगर नहीं करेगा तो इसकी इज्जत क्या रहेगी? उसका कमिटमेंट ये सब बुल बच्चन हो जाएगा, राइट? तो इसलिए उसने रेगुलरली डाइट भी फॉलो किया, फोटोज भी अपलोड किए, और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ, उसका 20 किलो वजन कम हो गया. My dear friend, you can do the same. I'll give one more example of mine. Last year, 2022, I announced on social media that I'm going to create 365 videos in 365 days. Let me be really honest, I couldn't create 365 videos. I created around 270 videos, which is not bad. For a person who created around 40 to 50 videos only, or maybe 70 videos, less than 100 videos in a year, तो वही पर्सन ने around 270 video generate kiye. Now this is a really great achievement. Now for this year, I set the target for 700 videos. I set target for 700 videos. And I already announced that on social media, on everywhere. Everywhere I announced that. Now I am under tremendous pressure to deliver it. So मेरी जो habit है perfection की, उसको break करने के लिए ये फंडा बहुत जरूरी है. I hope you got the technique. आप बोलेंगे समीर, लेकिन मैंने ये ऐसे भी सुना है, यू नो, वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट सक्सेस मेक द बिग नॉइज. ये किसके लिए पता है? जो इंसान बहुत ईमानदार है. और मुझे पता है मैं बहुत ईमानदार नहीं हूं खुद के साथ. आई डोंट वर्क हार्ड इन साइलेंस, आई स्लीप इन साइलेंस. साइलेंस होता है तो मैं सो जाता हूं. मेरे को पता है मैं क्या हूं, इसलिए मैं सोशल मीडिया के ऊपर अनाउंस करता हूं. तो आप खुद से पूछो कि आप क्या हो, आपको आंसर मिल जाएगा एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक द एक्शन. Great, awesome. The amazing questions you're asking. I really appreciate that. So, do you have any other question? Shalla Durai, unmute yourself. No, thank you. I got your point actually. Okay. No, you raise your hand. I thought, I guess it was raised way back. Yeah, I could. Yes. Yeah. Okay. So go ahead, my dear friends. Let me know if you have questions. The last question for today. It is 10:10 right now. So last question for today, I would love to take. Last question for today. Last 30 seconds. You can raise your hand or put your question in the chat box. Smita ma'am, welcome. Hiren ji, welcome. Gaurav, welcome. Let me know if you have any question. Otherwise, we are going to wind up the session. And kindly forgive me, all my dear friends. There is a technical challenge in the video, and hence I couldn't turn it on. मतलब जब मैं on कर देता हूँ, वो hang mode में जाता है, वो statue mode में जाता है. क्यों जा रहा है? I really don't know. It is happening for the first time, and I'm very happy it is happening right now. Not in our actual session, not in our actual webinar. So let me try to turn on the video. Great. I hope you can see me right now. I hope video will be like this for a longer duration. Hi Hiren ji. Number 26. आपने अभी तक डेटा शेयर ही नहीं किया. So share your data fast so that, you know, we can work on the purpose of your life. I told you, share your data of, you know, birth time, birth date, birthplace. From that, we will understand what is the purpose of your life, and that will boost your immunity power, that will boost your lifespan.
on this planet Earth. It's not what I'm saying. It is by book Ikigai. In the book Ikigai, it has been mentioned that when you find the purpose of your life, then automatically you become really happy. You start living your life like a champion and you live a long life. Awesome. So great, great, great. My dear friends, I hope there are no questions. I can't see any question right now. I cannot see the question. So great. So that's it from my side today. See you very soon in the next question answer session. And mostly it will happen on 22nd. Again on Sunday, we will try to connect 22nd or by 9 p.m. And we will have another question answer session. So till then, God bless you, enjoy and take care. Bye.